This is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. The class Ethics and Values, class number 17, 17 number class. तो आमे पाखापाखि शेष पर्यायर पहुंची सारी पिले आई थिंक सो आसंता काली कंप्लीट हम चैप्टर बही पूरा कंप्लीट हम एथिक्स एंड वैल्यूज आसंता काली कंप्लीट हम तापर आमे देखिबा जदि हुए ईवीएस क्लास आमे स्टार्ट करिबा नेक्स्ट पर्यायर नहले आउ कोन पढिबा एथिक्स एंड वैल्यूज सेकंड सेमेस्टर क्लास भी स्टार्ट करिबा तो आज क्लास रे आमे पढुचे जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रथम जिंस प्रथम पर्यायर जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन माने लिंग को आक्षेप कला भलिया जमती पुरुष किंबा स्त्री को आक्षेप कला भलिया भाषा हैं एंड कम्युनिकेशन बा ए भलिया किछि एथिक्स एंड वैल्यूज नॉर्मली 25 मार्क्स 25 मार्क प्रत्येक सेमेस्टर में पढिबा पिले सो लैंग्वेज इज मैन मेड आम समस्त जानिथिबा लैंग्वेज इज मैन मेड भाषा मनुष्य तयारी बा मनुष्यकृत भाषा होछि मनुष्यकृत लैंग्वेज इज मैन मेड एंड इट इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन यह निज को व्यक्त करिवार एक माध्यम इट इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन इट रिफ्लेक्ट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस मनुष्यर भावना को व्यक्त करिवार माध्यम होछि भाषा आवर जजमेंट्स एंड द कैपेबिलिटी competence of individuals to whom they are applied and our judgment what do we think about other people what do we tell about them is the judgment that we think about other people आम अन्य लोकर विषय रे जहा चिंता करू आउ ताकू जहा कहू सेटा ही भाषा रे पिले simply put language is an expression of the way we value some people language is the way of expression that on that way we value people लोक को जेति की गुरुत्व दो ता प्रति आमे सेही भलिया भाषा प्रयोग करि थाउ सो वेरी ऑफन आवर लैंग्वेज इज जेंडर वाइज्ड वेरी ऑफन प्राय सब बेले आवर लैंग्वेज इज जेंडर वाइज्ड लिंग को आक्षेप कला भलिया भाषा आमे कहि थाउ समस्ते सो द लैंग्वेज वी यूज इन एवरीडे लाइफ दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करथवा समस्त भाषा द लैंग्वेज वी यूज इन एवरीडे लाइफ व्हाट हैपेंस इन आवर पॉपुलर कल्चर इज लोडेड विथ सच बायस ए भलिया कॉन्फ्लिक्ट माने सिचुएशन रे हमें अछि कि हमर भाषा स्वतः प्रवृत्त भाव रे जनकर लिंग को माने से पुरुष किंबा स्त्री तक आक्षेप कला भलिया भाषा हम पार्टी रु बाहरिता Even our text, school curriculum and literary classics are not free of these. And not only ourselves, केवल आमे नुह, even if our curriculum, literary classics are not free from these. आम बही सबु, even if आम साहित्य को जदि जीवा, आम साहित्य रे भी ए भलिया भाषार व्यवहार आमे देखिबा को पाइबा. Sometimes social groups use language as a tool to assert and maintain their dominance over others. Social groups समाज रे जो गोष्ठी सब अछंती दल सब अछंती से माने अन्य को आक्षेप कला भलिया भाषा सब व्यवहार करि थामते कोन पई टू शो देयर डोमिनेंस ओवर अदर्स निजर आधिपत्य देखैबा पई टू शो देयर डोमिनेंस It reflects the superiority of one group and the inferiority of another group. And from this, it is very clear that those people who are commenting on other people, they want to exactly show their superiority. सेमाने तांकर superiority बा प्राधान्यता देखेबा पई चाहुथामते नहीं बिले. And gender group also suffer from this linguistic dominance and differentiation. And all gender groups suffer from this समस्ते यार चापरे प्रभावित होइथामते so a close look at the language we use on a regular basis shows how it differentiates between men and women and if you look carefully at the language that's being used by us आमे जो सब भाषा व्यवहार करूचे we will find that we use a particular language for men and a particular language for women our language is also not same for the men and women स्त्री एवं पुरुषों के प्रति महिला एवं झील मान प्रति समस्त आमर भाषा समान न थाए कंग्रेचुलेशन सुनीता देन बॉयज एंड गर्ल्स बेसिस शोज बॉयज एंड गर्ल्स इन ए 2011 स्टडी 2011 रे गोटे स्टडी हेतिला
In a 2011 study, it has been noted that countries with gendered language experienced higher average gender equality. And in a study being undertaken in 2011, it shows clearly that the language where gender equality is not maintained, these gender based languages are frequently used. ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ। and in 2019 2019 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା। In 2019 study reveals that using gender neutral pronouns increases positively attitude towards women. They help in reducing the prominence of male identity and subsequently in generating less gender based bias. So 2019 study रे यह clear ହେଇଥିଲା ଯେ पिले when we use gender neutral language माने जेंडर को बेस कला भलिया कथा जेतोळे आमे व्यवहार करूने से जगह रे वुमेन मानकर पोटेंशियल बढ़ी जाए, से समाज रे स्थिरता कंस्टेंसी देखा दिए। That's why we must avoid gender neutral language. Our language mustn't be sexist language, you can say, sex based language. So what is gender language? Then question arises spontaneously, what is gender language? How do we use in our everyday life? नहीं ये प्रश्न उत्तर जो देखियो हमें। Some words is used in our daily interaction and conversation project male dominance, while some words and sentence express attitudes undermining women. If we will examine the words that are being used by us in day-to-day conversation, we'll find that interaction and conversation are interaction and conversation. आमर जो कथावार्ता होचे भावर आदान प्रदान करूचे आमे समस्ते, it projects male dominance. सब बेले पुरुषर प्रधानता देखई थाए, दर्शाई थाए, male dominance प्रूव करी थाए। while some words एभली किसी शब्द भी आमे व्यवहार करि थाउ, some words and sentences express attitudes undermining women. आउ किछि शब्द सब बेले स्त्री मानकु तळकु नेला भलिया शब्द आम पाटिरु बाहरी थाए। And these exemplify respect for one group and disrespect for the other and are called gender language. And from those instances that we have discussed now, getting me? From these instances, it is very clear that it shows respect for one group and disrespect for other. एथेरे कोन हुए पुरुष माननको सम्मान मिलुथिबा बेले स्त्री मानकर सम्मान हानि ही थाए। And this is called gender based language or gender language. So the language used to undermine and belittle women is offensive in nature, and whatever language we are using, if that language is hurting someone else, or if the language that's being used by us is hurting a woman particularly, then this is called women offensive. This language is offensive for women in nature. Such offensive language is called sexist language, and such offensive language that is being heard by women, and by hearing that, if they felt irritated, then this type of language mustn't be used by men in society. So next, what is there? Then another thing is there. What is sexist language then? Use of words or language can also have sexual connotation. Sexual connotation, kamo uttejaka, kamo bhavana, pradipaka, etc., etc. Sexism in language manifests itself when language devalues members of a certain gender, and sexist language in many instances promotes superiority and arbitrariness of the males, humiliates women. When sexist language being used as a comment, you can say, you might have seen, lots of videos are getting viral nowadays where boys and girls, boys are commenting girls, even if males are commenting women, etc., etc. This is what, such that language that is unbearable or unhearable, you can say. This type of language mustn't be used. Kariba katha no, but still some groups, some peoples are there, they are using. And this type of sexist language mustn't be used in our society. It is not only bad for ourselves, it is also bad for society, bad for our country, but bad for the community where we are living. It creates a wrong biological image of women, and by using such type of language, it creates a wrong biological image of women.
स्त्री मानकर जो जैविकता अच्छी जैव विविधता अच्छी ता ऊपर यार खराब प्रभाव पड़े एफेक्ट्स देयर कॉन्शियसनेस तांकर जो सचेतन मन अच्छी से सचेतन मन ऊपर यार प्रभाव पड़े एंड इरोड्स द फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इन वुमेन निज ऊपर भरोसा उठी जाए जे मु समाज रे बोली पारिबी फ्रिक्वेंटली समाज को मोर भी किसी अवदान अच्छे समाज प्रति मोर भी किसी कर्तव्य अच्छी यही भावनाटा स्त्री मानक मनरू धीरे धीरे अपसरी जाए जितेबाला यही भाया भाषा से माने समाज रे शुणती women are being humiliated in the lyrics and depiction through the use of sexist language and in our literature in our songs that are being sung by us even if you have seen you have heard you might have heard yes or no such type of language are being used that is hard to listen that is painful to listen when we listen such type of language even we can't sit with our mother or sister such type of scenes are being created in film also so such type of scene mustn't be there such type of song mustn't be sung there that what the feeling of a particular person जो जिनस जन को माने शुणिले खराब लगे ये भाया गीत भी बाहर कथा नुह ये कथा भी आम हवा कथा नुह तापर ताहले को भाया कथा हवा कथा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ताहले जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कौन व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ अवेयरनेस एंड इंडिविजुअल कंसेंस कहले विवेक मनुष्यर विवेक ही मनुष्य को प्रवर्तित थाए ठीक भाषा व्यवहार करिबा पय तमे जदि जने विवेकवान व्यक्ति निश्चित भावे तमे जो भाषा व्यवहार करछो ताहा निश्चित भावे भलो ही हेइथिबो we need not use words which demean subjugate or offend people with whom we interact and we mustn't use this type of language that hurts a man women directly or indirectly जदि कोनोसी भी भाषार प्रयोग जनक पई माने खराब लागुची जनकू सेही बलिया भाषा में व्यवहार करिवा कथा नो So both boys and girls, men and women should develop the courage of conscience to resist such use of words and everybody should be aware while they are using such type of words they must be aware that by using such type of language somebody is being hurt जे जनक को भल लागुनी से जिनस कहला परे सेही भलिया भाषा व्यवहार करिवा कथा नो we need to use language that conveys respect for each other and we must select our language आम निश्चित भाव आम भाषा को माने विवेक सहित ताकू बाछिबा दरकार यही भाया भाषा व्यवहार करवा दरकार कि से भाषाटा कहार क्षति न करू कहार असम्मान न करू दिस विल क्रिएट ए मोर टॉलरेंट एंड इक्वल सोसाइटी एंड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ लैंग्वेज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज दैट इज वी कैन क्रिएट व्हाट ए मोर टॉलरेंट एंड इक्वल सोसाइटी गोटे समाज रे साम्यता आम रक्षा करि परिबा Making language gender free or avoiding the use of sexist language is termed verbal sanitation. So making language gender free जदि भाषा रे आमे लिंगगत संयमता रखिबा अवॉइडिंग द यूज ऑफ सेक्सिस्ट लैंग्वेज खराब भाषा व्यवहार करिबा नाही दिस इज कॉल्ड वर्बल सैनिटेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड जमती पानी को आम फिल्टर करके मैला सफा करुचे से भाया दैट इज कॉल्ड वर्बल वाटर सैनिटेशन एटा हूँ वर्बल सैनिटेशन आम कथा कहबार संयमता रक्षा करबा एज वी नीड टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट जमती आम परिवेश को क्लीन रखा दरकार हाँ वी ऑल्सो नीड टू क्लीन आवर वोकाबुलारी निश्चित भावे आम भाषा भी सफा हवा दरकार परिष्कार हवा दरकार so we should be careful about using a language which is gender neutral either than gendered तो जेंडर लैंग्वेज व्यवहार करवा परिवर्ते जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आम व्यवहार करवा कथा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज और जेंडर इनक्लूसिव लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट अवॉइड्स बायस टुवर्ड्स a particular sex group. So gender, what is gender neutral language then? Gender neutral language is nothing but it is the language that avoids bias towards a particular sex group. जेते बेले कोडोसी एक कम्युनिटी वा ग्रुप को आक्षेप न करिके हमें कथा होचे that is called gender neutral language. Many words that incorporate the word men such as man made, mankind, manpower which we have discussed earlier are perfectly acceptable gender neutral alternatives, for example artificial or synthetic humankind or workforce. तो आम जमी कहूचे मैन मेड मैनकाइंड मैन पावर ये जगह ये सब वर्ड जिते बड़े व्यवहार करुचे आम ये जगह माने कौन होचे मैन मेड ताले वुमेन कौन तैयारी करूना मैनकाइंड वुमेनकाइंड कहीं होनी
These are what sexist word. This type of word, this type of words are raising normally. This type of words are called gender based language especially. So instead of those words we can use artificial, man made jagare ame artificial koi pariba, synthetic koi pariba, humankind koi, mankind jagare humankind koi pariba, workforce koi pariba, mainstream जोटा कहूँ हम workforce कही परिबा. So such type of words can be replaced very easily if we can choose our vocabulary. फाइनाली लास्ट शेष पर्यायर लिटरेचर, साहित्य, मीडिया, पॉपुलर कल्चर, कॉमन यूसेज नीड टू बी स्क्रीन एंड स्कैन बाय द क्रिएटर एंड यूजर्स. तो प्रत्येक जगार जमती लिटरेचर है, साहित्य है, मीडिया है, जो माध्यम सब रही कम्युनिकेशन मीडिया सब रही, पॉपुलर कल्चर आम जो संस्कृति रही, कॉमन यूसेज साधारण व्यवहार जो आम करुचे नीड टू बी स्क्रीन एंड स्कैन बाय द क्रिएटर्स एंड यूजर्स. जो मैंने यूज कर द्वारा ये जिनस लैंग्वेज फिल्टर की आसवा दरकार. गर्ल्स एंड वुमेन नीड टू रिजेक्ट वर्ड्स लैंग्वेज एंड गर्ल्स एंड वुमेन whoever are listening, for them also there is a suggestion, they must reject such type of language whenever they are coming, they are confronting such type of words being used by a man, they must reject strongly. से निश्चित भाव रिजेक्ट करवा दे. तुम्हें भाया कथा मो सहित हवा कथा नुह. Who are you to talk like this to me? But our girls, they are not so, you can say, से बड़ा डिजेक्ट करी पारना with they find disrespectful and demeaning. तो पिले आसंता काली शेष क्लास, आसंता काली शेष क्लास रे वुमेन एंड प्रॉपर्टी राइट्स पढ़िबा. तापरे एथिक्स एंड वैल्यूज 4th सेमिस्टर पिला मानकर पाठ सरीबो. See you there. Stay tuned, Master of English. Bye bye.